Assalamualaikum fam, the AR2 sisters are back with you guys at the dairy farm. सबसे पहले मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और हम इनके नेम्स ऐसे रखेंगे जैसे कि इनका इंस्टाग्राम होता तो इनके कैसे नेम्स होते, यूजर नेम. So let's go. I think this one looks really mad, so she's like a baddie. And this one looks like a couple, so I think we're gonna name them something like his queen and her king. Looks here so foodie. Look at her, she's like literally grabbing her food from the other side. So she's a literal fatty. यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा है, like बहुत सब कुछ organized है. You know what? I think कि पाकिस्तान में नानो की फार्म में जाके I'll literally introduce this और बल्कि मैं खुद बनाऊँगी साथ. Yeah, I'm kind of a good worker, you know. नानो की फार्म हाउस से याद आया, मेरे पास एक किस्सा है आप लोगों को मैं सुनाऊँ. So basically उनकी एक फेवरेट गाय थी, वो वहाँ पे बंधी हुई थी and मुझे उससे ना हाथ लगाने का बहुत शौक था लेकिन डर भी बहुत लग रहा था. सो आई वाज लाइक मैं क्या करूँ. मैंने एक स्टिक ली, उसके ऊपर एक कपड़ा मैंने बांधा और आई वाज टचिंग हर और वो इतने ज़ोर से उसने अपना सर हिलाया कि वो उसकी ना समहाउ उसकी रस्सी खुल गई, निकल गई, जो भी हुआ. शी स्टार्टेड टू लाइक जंप आई वुड से और मैं दरवाज़ा खोल के मैं भाग गई, मैं घर भाग गई. एंड मैंने इतनी लंबी तो उसकी रस्सी है नहीं, सो आई वाज लाइक आई थिंक आई शुड रन. तो मैं भाग के चली गई, दरवाज़ा खोल के भागी मैं और वो सारा दिन हमें वो गाय नहीं मिली थी. थैंक गॉड कि सब अपने रिलेटिव से तो यू नो दे न्यू कि ये हमारी नानो की है तो they gave us back. So I was like, you know Izzy always have these dangerous stories. अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक दफ़ा इसने क्या किया था, आयशा को स्टेयर से नीचे गिरा दिया था. Can you believe that? Don't mention that. You know there is so many things we have to tell you about her dangerous stories. Really, you guys should know this. She isn't less, guys. I'll tell you more about. वो बाद में बताएंगे. No, you won't let me tell. I'm scared. So cute. She's like literally a newborn, I guess. Oh, she's so cute. Oh, he's scared. यहाँ पे हर जगह स्नो ही नज़र आ रही होगी लेकिन जब आप यहाँ पे समर में आओ तो बहुत अच्छी ग्रीनरी होती है. लाइक यू वोंट बिलीव, इट्स सो कूल. दिस इज सो बिग हियर. एंड इफ आई टेल यू अबाउट टेंपरेचर, इट्स लाइक -10 राइट नाउ. यहाँ की काउस का सारा कलर जो है वो सिर्फ ब्राउन एंड वाइट होता है, मतलब यहाँ पे कोई ब्लैक एंड वाइट काउस नहीं होती. एटलीस्ट वी हैवंट सीन सम. Like at least we haven't. I'm sure. I'm sure. But I'm talking about this one, okay? Wait, guys, can you spot a difference? Aisha, would you like to smile? It's rude. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे ग्रीन बॉक्सेस में रैप हुए हुए हैं. इन सारों के अंदर मतलब गाय का चारा है. And over there you can see it as well. लाइफ भी हमारी एक लाइफ का पार्ट है. मैं आपको दिखाती हूँ Izzy what she's doing right now. I've adopted them. Oh, look at this. Miracella is also there. This one's Miracella. ये Miracella नहीं, ये परवीन है. They're loving me. Oh, sorry. I'm sorry. So that makes €8 per hour today. Aisha, what are you doing there? मैं future farmer हूँ तो मैं अभी यहाँ पे practice कर रही हूँ. अब मैं आपको एक बताती हूँ बहुत ज़रूरी चीज़. I'm going to just show you जो मैं तो नहीं पीती but it's very good for your bones and it's milk. Let's go. I'm going inside. I'll show you how this looks like. Let's go. Okay. इसमें हम लोग €1 डालेंगे. That equals to 195 rupees? Yeah, 195 rupees. Okay. There goes the bottle. Okay. So this is like गाय, right? Yes. Basically पाकिस्तान में गाय दूध देती है and here we got the machines for that. So आशा लगता है घर जाके खीर बनानी है. जिस हिसाब से she's doing this. There goes the second one. दूध पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. It is very good for your bones. लेकिन yes, you can already see कि Iman Api is never a fan of it. Let's say bye bye to the farm. So it was a great experience in the farm. बिल्कुल पाकिस्तानी vibes आ रही थी. अब यहाँ पे एक छोटा सा river है. We are going there.
Let's go. Guys, हमने आपको information दी थी about our next video कि हम लोग चाहे थे हम लोग Q&A करें. So उसके लिए questions आप please comment section में drop करें. anywhere you like, Instagram or so, we're gonna copy them. हम लोग कोशिश करेंगे हम सारे questions answer करें. If not possible, तो हम part 2 भी तो ला सकते हैं. So that's not a problem. बहुत दिल करता है कि मैं यहाँ पे अपने डॉग के साथ और यहाँ पे उसे वॉक कराऊँ, लेकिन I don't have a dog. And that's on being Pakistani. So much guys for joining us. हमारे हाथ freeze हो रहे हैं, that's why we have to end our vlog here. Make sure to show us your love and support and make us warm again. And don't forget to drop your questions in the comment section or Instagram, doesn't matter. Like, share and subscribe. We love you all. Allah Hafiz. Let's go.